chapter is optics. Basically it's a chapter number 9. Chapter number 8 sound है from the section 2 and ये chapter number 9 है. Chapter number 9 optics. ठीक है, in this chapter we have to learn reflection, refraction. ठीक है, these two concepts we have to learn. So we start with article reflection. Now what is reflection? So everyone know the reflection, but बहुत लोगों को what is reflection अगर मैं पूछूंगा तो बताना नहीं आएगा, but they know the reflection. So reflection means, let I tell you simple example. When we are considering mirror, एक mirror है, अगर मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होता है, दिस इज अ इंसिडेंट लाइट रे, देन यही लाइट रे इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम and this phenomena of light is called as reflection. Now here this light ray we can call as incident ray. ये है reflected ray. And यहाँ पे एक मैं normal भी draw करता हूँ. This is a normal. Normal means perpendicular. Physics में normal का मतलब है perpendicular. So this is normal means it's perpendicular to the surface is the normal. Now ये जो एंगल है, this angle is called as angle of incidence. ये एंगल है, this is called as angle of reflection. So I is angle of incidence. R is angle of reflection. Then after that, ये जो एंगल है, the angle made by incident ray with the surface, this angle is called as glancing angle. So I can write IG. So this is glancing angle. ठीक है, ये सब तो चीजें अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. So incident ray, normal, reflected ray, angle of incidence. Now the question is here. So when light is reflected from mirror, what is the angle of deviation? What is the angle of deviation? Now deviation means what? Now see here, because of mirror, instead of going light, if mirror is not there, then light ray can go like this. But because of mirror, it is reflected and moving in this direction. So this is angle of deviation. This light ray is deviated with this angle because of mirror. So this is angle of deviation. So delta is angle of deviation. Now, how we get angle of deviation formula? So you know that this is straight line. Then I plus R plus delta is 180. I plus R plus delta is 180. Now here we have to cover the laws of reflection. So in 10th standard you learn the laws of reflection. So let me cover the laws of reflection and then again we come to this deviation formula. Laws of reflection. The first law is about incident ray, normal and reflected ray. First law is about incident ray, normal and reflected ray. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे incident ray, normal and reflected ray lies in the same plane. They are in the same plane. Or the same law we can write in another word. Incident ray and reflected ray lies opposite side of the normal. Again, in that way also we can write the first law. The first law is incident ray, comma, normal and reflected ray lies in same plane. So this is the first law of reflection. Second law of reflection is relationship between I and R. You know that I and R both are equal. So angle of incidence is equal to the angle of reflection. So this is a second law of reflection. Now here we are using the same logic here. So here I plus R plus delta is 180. Then I can write I plus delta is equal to 180. So I plus I, 2I plus this delta is equal to 180 degree. Or I can write delta is equal to 180 minus 2I.
So this is expression for angle of deviation. This is expression for angle of deviation. Means if light ray is incident with an angle 30 degree on mirror, then it is deviated with, then substitute the I 30 degree. So 180 minus 2 into 30 means 60. So it is deviated with 120 degree angle. So this is a simple calculation. So you already learned laws of reflection, laws of reflection in 10th standard. The same thing we covered in the more detail here. Okay, as well as you remember the phase change in the reflection is 180 degree. So what is phase, that you have to learn in the later article, but so here we are not discussing the phase in detail, because what is phase that you have to learn in another article. Take it. I hope everyone understood this reflection. After that reflection, we have to learn refraction. But I hope everyone understood this. Now we start refraction. What is refraction? Next article is a refraction of light. Now in refraction we have to consider two mediums. So for example, I consider here a glass. When light incident on glass, so this is a normal here, then instead of going in straight line, it bent towards the normal, and this is called as refraction. When this bending, refraction means what? Bending of light ray. Bending of light ray when it travel from one medium to another medium is called as refraction. So refraction means bending of light ray. Bending of light ray when it travel from one medium to another medium. Now here we classify these two medium based on the density here. So here, this, if I consider this is an air medium, this is a glass, then I can call this medium 1. This is the medium 1. And I call this medium as a rare medium. And this is a medium 2. I call this medium as a denser medium. Now what is rare and what is denser? You remember here, rare and denser, we classified the medium based on their density. So denser means whose density is the more is called as denser medium. Rare means whose density is less is the rare medium. Now when we are talking about the glass and air, everybody know that glass having a more density. So glass is a denser medium and air is a rare medium. So simple conclusion here, when light ray is traveling from rare medium to denser medium, it bend towards the normal. And ulta, denser to rare, it bent away from the normal. That you already learned in the 10th standard. Take it. But rare and denser, rare means less density medium and denser means more density medium. That you remember. Now here, when we are talking about the two medium, water and air, water having a more density as compared to air. So here, water is a denser. Water is denser. But if we compare a glass and water, अगर मैं ग्लास और वाटर को कंपेयर करूंगा तो दोनों में से डेंसिटी ग्लास की ज्यादा है, वाटर की कम है. Then that time glass is a denser and water is a rare medium. Means when the light ray is traveling from, so let I tell you simple example. अगर ये एक बकेट है, so बकेट में ये नीचे वाला पोर्शन में हमने एक ग्लास रखा है, ठीक है, ये पानी यहाँ पे. So when the light ray is going like this is the normal, this is the angle of incidence. Then instead of going in straight line, it bend towards the normal. Then in that time, this glass is a denser medium and this water is a rare medium. That you remember. ऐसा नहीं है कि denser medium यानी glass यानी हमेशा denser है, water यानी हमेशा denser, ऐसा नहीं है. So based on the density we classified rare and denser, that you can remember. ठीक है.
अभी रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium is called as refraction of light. उसके बाद, so this angle is angle of incidence. ये जो एंगल है, this is angle of refraction. ये R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मैंने यहां पे R यूज किया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, सो आई यूज R फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो यहां पे जो I है, I is angle of incidence, R is angle of refraction. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. नो एंगल ऑफ डेविएशन. लिसन, अगर एक ग्लास नहीं होता तो लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करती, लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करती, बट लाइट रे यहां पे बेंड हुई है. सो दिस बेंड, जिस एंगल से ये बेंड हुई है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. अभी इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2i. देन इन दिस रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट वी हैव टू डिस्कस. नाउ सी हियर, यू नो द ज्योमेट्री. ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. अगर ये एंगल i है, तो ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल भी i होगा. ये टोटल एंगल i रहेगा. तो हमें डेल्टा निकालना है. ये I में से टोटल एंगल जो I है, I में से R निकालेंगे तो डेल्टा बच जाता है. सो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और यहां पे इसका फॉर्मूला है I माइनस R. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. I hope everyone understood how we get this angle of deviation. Now next thing is we have to learn laws of refraction. So यहां पे laws of reflection थे, अभी laws of refraction यहीं पे मैं लिख लेता हूं. The first law is again same about the incident ray, normal, and now here reflected की जगह refracted आएगा. So refracted ray. So here the first law is incident ray, normal, and refracted ray lies in same plane. So this is the first law, or you can write in another word also. Incident ray and refracted ray lies opposite side of the normal. You can see this is the normal. One ray is toward that side and one is toward this side. So we can write in that way also. Now the second law is relationship between I and R. Now here you can see I and R both are not same. They are not same. And that relation is given by scientist Snell. The second law जो भी है, it is called as Snell's law, जो आपने 10th standard में पढ़ चुके हैं. What is Snell's law? I और R का रिलेशन क्या है? Means angle of incidence and angle of refraction का रिलेशन है sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So where this n to 1, n means refractive index. In this chapter we are using n for refractive index. How to read it? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So this is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक है. I hope everyone understood these laws of refraction. Now what is refractive index? Refractive index we have to cover in detail. ठीक है, refractive index होता क्या है? But I hope everyone understood this refraction. What is refraction? Bending of light is the refraction. Then laws of refraction we covered. Now let me move for the next article. What is refractive index? Hello student. In today's lecture, we have to continue chapter number 9 from the syllabus of physics, and it is optics. Last time we learned reflection, refraction,
as well as laws of reflection, laws of refraction. In today's lecture, we have to start the article refractive index. Now, what is refractive index? So, new article, refractive index. Basically, refractive index is represented by a symbol n. It may be represented by symbol mu also, mu or n. So, let me use n for refractive index. Now, what is refractive index of any medium? That we have to discuss here, because when we are learning the phenomena refraction of light, the refractive index is very important here. Now, refractive index gives idea about a density of the medium. Last time we learned rare medium, denser medium. Denser means the more density medium. Rarer means a less density medium. Means here the simple conclusion is, if the medium having a more density, it means that it has a more refractive index. Less density means it has a less refractive index, that you note. Okay, now let me discuss here the two mediums, water and glass. You know that glass is a more denser, so glass having a more refractive index as compared to the water. Now, what exactly mean by the refractive index? So that we have to discuss. You already learned refractive index in 10th standard also. But again, we have to see what is refractive index. Basically, everyone know that when light travel from one medium to another medium, it bend, and that bending is the refraction. As well as when light is enter from one medium to another medium, this velocity changes, wavelength changes. What happen about frequency? Not one thing. Frequency is constant. Frequency is constant in all the medium. Okay, means frequency is not changing when light enter from one medium to another medium. Means wavelength changes, velocity changes. Now here, so based on that, change in the velocity of light in a medium, we define this refractive index. So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to, we can write here, velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2 is the refractive index. N is for refractive index. How to read this? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And it is defined as a ratio of these two velocities. So I can use symbolically C1 divided by C2. Or I can use V also for the velocity. But here for the velocity of light I use C here. So this formula we get, velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Now here, the same formula. When light is entering from air to glass, we can write refractive index of glass with respect to air is velocity of light in air divided by velocity of light in glass. So this formula we can write for the refractive index of the glass with respect to air. Now similar manner, if you want to write refractive index of water with respect to air, then we can write velocity of light in air divided by velocity of light in water. Now how much is the velocity of light in air? Velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. That is a constant and everyone know that. Okay. Then if it is 3 into 10 raised to 8, then we can find out how much is the velocity in the glass. You know that when light enter from rare medium to denser medium, then velocity of light decreases. Now how much decreases, it depends on the refractive index of that medium. Now here refractive index for glass is approximately, it is 1.5. If it is 1.5, then this is 3 into 10 raised to 8. You can find out velocity of light in glass is velocity in air divided by refractive index of glass with respect to air. So it is 3 into 10 raised to 8 divided by 1.5. So in glass we can say that velocity of light is 2 into 10 raised to 8 meter per second.
So this is the velocity of light in glass. It depends on the glass also, how much is the refractive index. So if the refractive index is 1.5, then velocity of light in glass is 2 into 10 raised to 8. Similar manner, you remember one thing here, velocity of light in water by this formula. You can transfer this to this side and this refractive index to that side. So Ca divided by refractive index of water with respect to air. Then velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8. Refractive index of water is 4 by 3. 4 by 3. Or you can write 1.333. Recurring 3 is coming. Okay. So after solving this, whatever you get, or you can write here 4 by 3. So 3 is shifted up. So 3 into 3, 9 into 10 raised to 8 divided by 4. So this is the velocity of light in water. Or you can solve this. 4 2s are 8, 1. Again 4 2s are 8 and 2 is coming, 4 5s are 20. So into 10 raised to 8. So 2.25 into 10 raised to 8 is the velocity of light in glass. Now you remember some values of the refractive index for your reference only. So refractive index of glass 1.5, water 1.33. If we are talking about the diamond having a highest refractive index and it is 2.4 approximately. These are the approximate values. So these are not the exact that you remember. Now here we covered refractive index definition in terms of this velocity. Now here you remember, if we written the refractive index of any medium, means refractive index of glass with respect to vacuum, that refractive index is called as absolute refractive index. Now the next term is absolute refractive index. Absolute refractive index. Now absolute refractive index means refractive index with respect to vacuum or with respect to air is the absolute refractive index. You note one thing here. The refractive index we are taking for vacuum, it is 1. For air also it is closer to the 1. 1.00 something we get. But it is closer to the 1. Refractive index for air or vacuum, it is closer to the 1. And refractive index of any medium with respect to vacuum or with respect to air, that we are calling as the absolute refractive index. Now here I written only with respect to air only, but we can write the refractive index with respect to another medium also. For example, refractive index of glass with respect to water. We can write as a velocity of light in this medium divided by this medium. So velocity of light in water divided by velocity of light in glass. So this is refractive index of glass with respect to water. And you know the velocity of light in this water and glass. You can use these values to find out refractive index of glass with respect to water. Now here, refractive index is a very important. You already learned in the 10th standard. So twinkling of the star. Why the star twinkle? The reason is the fluctuation of refractive index of the medium. So Earth's atmosphere, refractive index changes. Means refractive index changes means what happen exactly? The density changes. So and because of that, as we enter in a medium, the density is different in the different layer. If we divide the atmosphere in a different layer, the density is different in different layer. And because of that, the light having a different velocity in different atmospheric layer, and because of that, we feel that a star is twinkling. Means twinkling of the star is the example of fluctuation of refractive index of atmosphere. Okay. Now you note here, the refractive index is very important. Similar manner, just I told you, when light enter from one medium to another medium, velocity changes, wavelength changes, but the frequency is constant. Now we know one relation. We know. So velocity of light is given by formula frequency into wavelength. Velocity of light is equal to frequency into wavelength. Now what is wavelength? Length of one wave is a wavelength. Okay. This wavelength term,
frequency, velocity, you already covered in the previous standard. So you already aware with this. You note one this relation. This relation you have to learn in the section 1 also. So velocity of light is equal to frequency into wavelength. Now I can write, hence, I can write this formula. Velocity of light in medium 1. Velocity of light in medium 1, I can write frequency into wavelength 1. I am not written here frequency 1 because frequency is constant. Similar manner, velocity of light in medium 2 is frequency into wavelength 2. So we get C1, we get C2. So these are the velocities. Hence, refractive index is, refractive index formula we can write, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is C1 by C2. Now let us substitute the value of C1 here as well as we substitute C2. Then what we get? So F lambda 1 divided by F lambda 2. Then here F is a common, get cancelled. So here we get formula. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is wavelength in medium 1 divided by wavelength in medium 2. So we get a formula of the refractive index in term of wavelength also. This is second formula of the refractive index that you can remember. So if you given the wavelength in the two medium, you can find out the refractive index of the medium with respect to one another. I hope you understood this refractive index concept, as well as we can define refractive index in terms of more terms. For example, if I consider time is t, and in same time t, light covers a distance d1 in medium 1 and distance d2 in medium 2. Okay, let us erase this one. Okay, now here, in same time, if light covers distance d1 and d2 in medium 1 and 2 respectively, Okay, then we can write, you know the formula of velocity. Velocity in any medium is given, velocity basic formula, distance by time. So distance is d1, time is t. And velocity 2 I can write, distance 2 divided by time 2. And the time is same. So we get d1 by t and d2 by t. So if you substitute in this formula of refractive index, we get refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is, so we can substitute here. So d1 by t, instead of this c1 I substitute this, and instead of this c2 I can substitute this. So d2 by t. So t get cancelled, we get formula d1 by d2. So this is also an expression for refractive index. So distance in medium 1 divided by distance traveled by light in medium 2 is also the refractive index if the time is same. So we can write a refractive index in terms of many more quantities, but you can remember these formulas for the problem point of view only. Okay. Then after that, after this refractive index, we have to cover a new article, and this article is total internal reflection. That total internal reflection again you covered in the 10th standard also. Okay. I hope everyone understood this refractive index article. Or one more formula I can tell you about the refractive index here. So in terms of real and apparent depth, pay attention. What is real depth, what is apparent depth, that I tell you. Now pay attention, if this is a beaker or glass, in that glass you have taken a coin. So this is a coin in a glass. Okay. So when the glass is empty, the distance of the coin from the upper edge is a real depth. Okay, it is real depth.
Now when let I draw the same diagram, same glass, huh? When we filled it with water, then we observe that the coin is lifted by some distance. It is observed because of some refraction. It is observed because of refraction. Now, the distance of this coin from the upper edge is called as apparent depth. So that distance is called as apparent depth. Okay. Now listen, why it is called as apparent? Actually, coin is not lifted. We feel that it is coming up. You can do this experiment at your home also. You can take coin in a glass and you can observe it. Then one more same size glass, you can take same 1 rupees or 2 rupees coin you can take, and you can pour some water in that and you can observe that. Then you feel that the coin in a glass with the water, you feel it is little above the another coin. So this is real depth and this is apparent depth. So here refractive index in term of real depth and apparent depth we can write. So refractive index of this water medium with respect to medium 1 is, we can write real depth divided by apparent depth. So this is also a formula for refractive index. Okay. I hope everyone understood what is refractive index. Now after the refractive index, we have to proceed for the next article. And that article is total internal reflection. Listen side by side, you can note down the things which you want by pausing the video. These are the very important things. Next article is total internal reflection. Okay, we have to learn a new article, total internal reflection. Okay, reflection we learn, refraction we learn. Now this is total internal reflection that we have to cover. Now here, what is total internal reflection? We have to learn this article with respect to some points. First one is what is total internal reflection. The second point is conditions of total internal reflection. After that, applications of total internal reflection. Take it. Now first we learn what is total internal reflection. Now for this article, the basic is, you must have idea that when the light is traveling from rare to denser, where it bend? Rare to denser, it bend towards the normal. And ulta, denser to rare. If light is going from denser to rare, it bend away from the normal. And I hope everyone know this, because you already learned it in the 10th standard as well as in yesterday's lecture also we covered it. Take it. Now here in total internal reflection, we consider light is traveling from denser medium to rare medium. Now let I show here denser medium. So this is water, glass, anything you consider. Take it. This is source of light. Source of light. Now from this light source, a light is emitted. So one light ray incident here. So this is normal. So instead of going to this light ray in a straight way, it bend away from the normal. So just we discussed, when it is moving from denser to rarer, it bend away from the normal. So instead of going in straight way, it bend away from the normal. So some light ray get refracted, some may be reflected. Some means simply here we can say that partial reflection. Let I show some light here also. Some light is reflected, some light is refracted.
Now we talk about only refracted light. So light ray bend away from the normal. This is the first light ray. Now I consider second light ray. So this is second light ray. This is second normal. Now if we consider this angle of incidence and this angle of incidence. So this is a larger. This angle of incidence is larger as compared to this. So here the angle of refraction is also a larger. So here it bend more away from the normal. Okay. Now next time I consider third light ray. So this is normal. Now, so here this angle of incidence is greater than this I2. So this angle of refraction is also greater than this. So it bend more away from the normal. And here we get this angle of refraction, we get 90 degree. So when we get angle of refraction 90 degree, that time the angle of incidence in this denser medium is called as critical angle. Is called as critical angle. Now, after that, I consider one more light ray. So this is light ray. It incident here again with an angle greater than this. So here I can write this angle is greater than this. Then this light ray, instead of refraction, here reflection is occurred. Instead of, see here. So as this angle is greater than this. So angle of refraction must be greater than this. So greater than 90. So the light ray is coming in the same medium. If light ray is coming in the same medium after bounce back from the boundary, then it means that it is not a refraction, it is a reflection. And this is called as total internal reflection. Light is totally reflected internally. And this phenomena is called as total internal reflection. Now in simple way, so this is a denser medium. So this is medium 2. So this is basically denser medium. This is medium 1. So this is a rare medium. Okay. Now the second thing is condition. I hope everyone understood what is total internal reflection. I repeat it again in simple single sentence. When light ray is traveling from denser to rare medium, incident on the boundary of this rare medium with an angle greater than critical angle, then ray of light internally reflect in the same medium. This phenomenon of light is called as total internal reflection. Now condition. Now what are the conditions? Conditions, in the condition we have to write when the total internal reflection happen. It happen only when the light is traveling from denser to rare. Can it happen when it travel rare to denser? No, it cannot. हमें कब दिखाई देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब लाइट ट्रैवल हो रही है डेंसर टू रेयर ओनली. तो पहली कंडीशन, लाइट रे must travel from denser to rare medium. Second condition for total internal reflection is this, about the angle of incidence. The angle of incidence in denser medium must be greater than the critical angle. The angle of incidence must be greater than the critical angle. Then only total internal reflection is occur. So this is the necessary conditions for the total internal reflection. Now let me cover some applications here. First application. So here you know that optical fiber. अभी ऑप्टिकल फाइबर सब लोग अभी ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. जो भी इंटरनेट कनेक्शन बहुत लोगों ने लिया होगा, ब्रॉडबैंड, दे आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड दैट ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now, what is optical fiber, how it works, that we have to learn in the next article. But here you remember, so this total internal reflection is used in the optical fiber. The second thing is brilliance of stone, brilliance of some stone. For example, brilliance of diamond.
डायमंड शाइन क्यों करता है? द रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर आप देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो डायमंड कटिंग के बहुत सारे कोर्सेस है. हाउ टू डिजाइन अ डायमंड. अगर आप डायमंड बहुत ही केयरफुली देखेंगे तो डायमंड इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इट हैज अ मेनी नंबर ऑफ सरफेसेस. अगर आप कोई डायमंड देखेंगे उसको मैग्नीफाई, छोटा है तो, अगर बड़ा है तो भी आप देखिए, उसके सरफेसेस काउंट करेंगे तो बहुत सारे सरफेसेस होते हैं. सो व्हाई सो मेनी सरफेसेस? बिकॉज अगर किसी भी एक सरफेस से लाइट रे अंदर जा रहा है, then that light ray reflect internally 2-3 times and because of that diamond shine. तो डायमंड कटिंग के कोर्सेस है, अगर आप देखेंगे तो सर्च कर सकते हैं बाद में. सो ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं. देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एप्लीकेशन में नहीं हम बोल सकते, बट हियर इन दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी मैंने अभी आपको बताया, सॉरी नॉट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है, सॉरी फॉर दैट. नाउ उसके बाद हम मिराज. नाउ नेक्स्ट वन इज मिराज. नाउ व्हाट इज मिराज? Mirage is the optical illusion of water. It is optical illusion of water in desert. It is optical illusion of water. In Marathi we called it as a mrugajal. Means feeling of water. So in desert we feel that at some distance water is there. But if it travels miles and means any distance, then also we cannot see means simply water. The reason is it is the illusion, optical illusion of water due to this total internal reflection. Now, how we get this mirage? So let I explain this one also in detail. So basically, you can observe the water on highways also in summer days. Generally in afternoon time when we are traveling in a car or any other vehicle, so at some distance we observe that road is wet, some wet patches we can observe. So it is also illusion of water. So that is also another application. Take it. So many applications of the total internal reflection we can write, but let I explain this mirage. So just in the beginning I told you refractive index means simply twinkling of the star is because of fluctuation of the refractive index. Similar manner, so here total internal reflection is also based on that fluctuation of refractive index. Means not the total internal reflection, this mirage is based on the total internal reflection. Now pay attention here, let I explain it here. So basically when I consider this is surface, I consider this is surface of earth, ठीक है. Now I consider this is sky. Now we have to divide atmosphere into different layers. We have to divide this Earth's atmosphere into different layers. I divide the atmosphere into different layers. See here. Now in afternoon time, generally when sunlight incident on the surface of earth, it gets heated. अगर ये सरफेस हीट हो जाएगा तो सरफेस क्या करेगा, इसके नजदीक जो एयर है उसे हीट करेगा. जैसे ही एयर हीट हो जाएगी, एक एयर पार्टिकल है, एयर मॉलिक्यूल है, वो हीट हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन. यू ऑलरेडी लर्न कन्वेक्शन, ठीक है. तो यहां पे जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, डेंसिटी एयर की कम होगी, तो ये जो भी है रेयर मीडियम होगा एज कंपेयर टू दिस अबव मीडियम. ठीक है, ये पहला लेयर हीट हो गया,
उसका जो भी एयर पार्टिकल है उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो अगर ये सेकंड एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड अगर कंसीडर करेंगे तो जो भी क्लोज टू सरफेस होगा वहां पे डेंसिटी कम हो गई, तो वो मीडियम आपको एज अ रेयर मीडियम एक्ट करेगा एज कंपेयर टू द अपर लेयर। अपर लेयर हैविंग अ मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस, तो ये रेयर हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये रेयर मीडियम हो गया, ये क्या है, डेंसर हो गया। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू। उसके बाद क्या होगा, ये लेयर हिट होने के बाद यहां पे जो सेकंड लेयर है, लेट आई नेम दिस वन 1 2 3 4 5 6, सेकंड लेयर वाले एयर पार्टिकल हिट होंगे, वहां से फिर वहां की डेंसिटी कम होगी। देन अगर मैं थर्ड सेकंड मींस दिस थर्ड एंड सेकंड को कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा रेयर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। इसका मतलब है with respect to upper layer, the lower layer is a rare medium. And you know that when light is traveling from denser to rare, it bend away from the normal. Now when the light ray is coming from sky, एक लाइट रे में कंसीडर कर रहा है जो स्काई से आ रहा है, इंसिडेंट हियर, तो ऊपर वाले लेयर के कंपैरिजन में नीचे वाला लेयर कैसे रेयर मीडियम है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So here also instead of going in a straight line it bend away from the normal. जैसे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, तो ये bend हुआ away from the normal. So again here also it bend away from the normal. ठीक है, तो यहां पे भी it bend more away from the normal. ठीक है, then एक particular layer पे ये internally reflect होता है। ठीक है, जैसे यहां पे it bend away from the normal, more away from the normal, more away from the normal at one particular angle. It bend means it is internally reflected. When this angle is greater than critical angle, it is internally reflect. ठीक है, जब ये internally reflect होगा, अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा है तो उसे ये लाइट रे उसकी आंखों में चली जाएंगी। Why we see the any object? हम ऑब्जेक्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो हमारे आंखों में गई तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर वो हम अंधेरे में है, ऑब्जेक्ट उजाले में है, तो भी हम अंधेरे में तो भी उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो हमारे आंखों में गई तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, जो लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्काई इज इंटरनली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर एंड रीच टू द ऑब्जर्वर्स आई। तो ऑब्जर्वर को क्या होगा, उसे ये जो स्काई है यहां पे दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन में ये स्काई उसे यहां पे दिखाई देगा। एंड यू नो दैट स्काई इज ब्लू इन कलर, तो हमें जो ब्लू कलर है थोड़ा ब्लू कलर आगे दिखाई देगा। जैसे हम जो पॉन्ड देखते हैं, तालाब देखते हैं तो ब्लू दिखता है। देन ऑब्जर्वर या जो भी है उसे फील होगा कि अरे नहीं आगे कुछ तो पानी है, बट कितना भी डिस्टेंस चला जाएगा, जैसे ऑब्जर्वर आगे बढ़ेगा ये पैच आगे आगे बढ़ता जाएगा। सो इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द वाटर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, एज वेल एज एक यहां पे फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ आई कंसीडर दैट मच पोर्शन ओनली, ये इतना ही पोर्शन आप देखो, अभी ये इतना पोर्शन जितना हाईलाइट किया है उतना ही पोर्शन अभी हमें रेफर करना है एंड वी हैव टू डिराइव वन फॉर्मूला हियर। ठीक है, फ्रॉम फिगर बाय स्नेल्स लॉ। अभी स्नेल्स लॉ तो लास्ट टाइम हमने लर्न किया था, क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लाइट रे कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1। देखो स्नेल्स लॉ हमने क्या लिखा था, ये ऐसे था, ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल है, ये आई है, ये क्या है आर है, ऐसे लाइट रे आ रहा था। देन स्नेल्स लॉ हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम क्या है 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमने लिखा था साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। वही लॉ हमें इस पोर्शन को अप्लाई करना है। अभी देखते हैं,
उसके बाद क्या आएगा? अभी देखो लाइट रे 1 से 2 जा रहा था, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अभी यहां पे क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि लाइट रे कहा जा रहा है 1 में जा रहा है, रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है? मीडियम 1 में हो रहा है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ आईसी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। अभी आर कितना है यहां पे? 90 है। साइन ऑफ आईसी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या मिलता है? साइन 90 होता है 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 आ गया साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक है, अगर हमें रिलेशन ऑब्टेन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हम क्या करेंगे? यहां पे देखते हैं, यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा, ठीक है, यहां पे तो लिखा हुआ है तो मैं यही यूज कर लेता हूं। सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, साइन आई अपॉन साइन आर आ गया। इफ आई कंसीडर लाइट इज ट्रैवलिंग रिवर्स, अगर मैं कंसीडर करूंगा लाइट रे क्या हो रहा है? रिवर्स जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, तो ये यहां से ऐसे जाएगा यानी यहां से ऐसे निकलेगा, बिकॉज लाइट रे फॉलो इट्स ओरिजिनल पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज लाइट ओबे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे आ रही लाइट, अगर यहां पे सोर्स था तो लाइट यहां पे आ रही थी, अगर ये सोर्स मैं यहां पे रखूंगा तो लाइट यहां पे जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उसी हिसाब से मैं यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं इसे, तो क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने अभी आर कहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है? आई। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इक्वेशन 2। अगर मैं 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एक एक साइड कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या आएगा? अगर ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बाय साइन आई, तो ये साइन आई नीचे वाला साइन आई कैंसिल होगा, ये 1 मिल जाएगा। तो दिस इज अ रिलेशन। बाय दैट रिलेशन हमें यहां पे जो रिलेशन मिला था वो हम रीमॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या मिला था? अगर एक मिनट, नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये मिला था हमें साइन ऑफ आईसी। हमें क्या मिला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 मिला था साइन ऑफ आईसी। उससे ही एक फॉर्मूला जो प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है, मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या आएगा? ये फॉर्मूला यूज करो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक, ये जो है इस साइड चला जाएगा, तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अभी मुझे मीडियम 2 कौन सा है? यहां पे इस डायग्राम के लिए हमने लगाया था ये फॉर्मूला। मीडियम 2 है डेंसर, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1 अपॉन, ये है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये एक फॉर्मूला है, वो याद रखिए प्रॉब्लम के लिए। अभी देखो ये कंसेप्ट तो आपने समझ लिया है, सिर्फ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंड क्रिटिकल एंगल सबको मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया। क्रिटिकल एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, इज द क्रिटिकल एंगल। अगर कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल दिया है आपको, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम निकाल सकते हैं। तो अभी मैं पूछूंगा ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे डालेंगे आप। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड 1 अपॉन साइन ऑफ आईसी मिल जाएगा। एंड बाय सॉल्विंग दिस मैथमेटिक्स यू विल फाइंड आउट व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें लर्न करना है ये है ऑप्टिकल फाइबर. ये आर्टिकल हमें लर्न करना है इन डिटेल. And you know that optical fiber based on total internal reflection. So that we start in next part. I hope everyone understood. Thank you. Hello everyone. In today's lecture, we have to start new article from chapter number 9, Optics of 11th standard syllabus. Last time we learned total internal reflection. Now in today's article we have to learn one more concept, one more article which is based on total internal reflection, and it is optical fiber. Now ये optical fiber क्या होता है? So nowadays we are using broadband at your home. Now in that broadband we are using optical fiber cable. Now why we are using optical fiber cable? What are the advantages of the optical fiber that we have to cover in this article? How it work? Okay, with this article optical fiber we have to cover with respect to following point. With respect to this construction, means how it is prepared. Then the next one is working, how it work. So next article is working of optical fiber. Then after that we can learn advantages of optical fiber, and last one we can learn uses of optical fiber. So these articles we have to cover under this optical fiber. Now let me learn construction first. Now what is optical fiber? Basically optical fiber is made from high quality glass or cords material. Let I show you here. This is an optical fiber cable. So this central part of the optical fiber cable is called as core. So this is the core. So this part is called as core. This core having a refractive index about 1.7. So these are the approximate values for your understanding only. Now this is a central part made from high quality glass or cords whose refractive index is 1.7. This core is surrounded by a material whose refractive index is less than this refractive index of the core. It is surrounded by a material having a lower refractive index, and this material is called as cladding. So this material is called as cladding. The refractive index of the cladding is about 1.5. And this core and cladding whole assembly is covered by a protective covering. Okay, plastic covering. So that we are not showing in a diagram, but here core and cladding, these two are the very important part here. Now we learn a last article, a total internal reflection. What are the conditions for total internal reflection? The first condition is light ray must travel from denser medium to rare medium, and the second condition is angle of incidence in denser medium must be greater than the critical angle. Then only we can see total internal reflection. Now here I told you optical fiber is based on this total internal reflection. Then these two conditions are very important here. Now construction. Optical fiber consists of or made from high quality glass or cords material, the central part, and the central part is called as core, having a refractive index 1.7. It is covered by a lower refractive index material called as cladding, having a refractive index about 1.5, and both core and cladding covered by protective covering. The diameter of this optical fiber cable is about 10 micrometer to 100 micrometer. So it is a very thin. So its diameter is very less. You can see 10 micro means 10 raised to minus 6.
10 into 10 raised to minus 6 meter, and here 100 into 10 raised to minus 6 meter. So it having a very means very less diameter. Okay, this is the construction of the optical fiber. Now how it work? That we have to understand. Before the working, let I tell you. Now I told you denser medium and rare medium. So you remember here whose density is more is the denser medium, and rare means whose density is lesser is the rare medium. Now in this case here, you remember the denser medium having a more refractive index as compared to rare medium. Now here core is having a refractive index 1.7, about 1.7, and cladding having 1.5. So when we are talking about these two mediums, the medium with larger refractive index is a denser medium with respect to this medium. So here when a light ray, now let us explain the working. When light ray is incident at one end of the optical fiber with a lesser angle, then it refract here. It refract, rare to denser it is going, so it bent towards the normal. So it bent towards the normal and incident on the wall of optical fiber. Now pay attention, this diameter of the optical fiber is very less. Diameter is very small, so 10 micrometer to 100 micrometer. So here this optical fiber having a very small diameter, and because of that, when this light ray incident on this wall of the optical fiber, it incident here with an angle greater than critical angle. Then as it incident here with an angle greater than critical angle, then total internal reflection occurs. This ray is internally reflect and incident on the opposite wall. Again here it incident on the opposite wall with an angle greater than the critical angle. Then again total internal reflection occurs, and this process continues before the light, means till the light ray emerges from the another end. Okay, everywhere it incident with an angle greater than critical angle, that you have to remember. Okay, now here it emerges. This is emergent light ray. So this is the working of optical fiber. I hope everyone understood. I explain it again. When light ray is incident at one end of the optical fiber with lesser angle, it incident here with an angle greater than critical angle, so total internal reflection occur. Opposite angle, it incident on the opposite wall with an angle greater than again critical angle, then again total internal reflection occur. So before emerging through another end, it suffer with multiple internal reflection, and this is the working of this optical fiber. Now after the working, what are the advantages? The first advantage. Now before proceeding towards the advantage, you note one thing here. So here this optical fiber sends the signal in the form of light. By using optical fiber, we are sending the signal in the form of light. So first thing is here, first and very important advantage is high level of security here. High level of security. So therefore these optical fibers are used in military purposes, or to send the signal from one point to another point. They are using these optical fiber cables. Or we can say that where the high level of the security is required, we are using optical fiber cable. Now nowadays I told you we are using broadband. So in that also we are using optical fiber cable. ऐसा नहीं हो सकता अगर कि ब्रॉडबैंड का केबल जा रहा है आप कट करेंगे और वो इंटरनेट यूज करेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता, बिकॉज हियर दे हैविंग अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. जैसे नॉर्मल कॉपर वायर होता है, अगर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है या कुछ भी है तो यू कैन कट दैट वायर एंड दूसरी वायर ज्वाइन करेंगे तो यू कैन रिट्रीव दैट सिग्नल. बट हियर so this is not happen because the signal is in the form of light, so high level of security is maintained. Second one is high bandwidth. High bandwidth. Now bandwidth क्या होता है? Bandwidth means a frequency, signal carrying capacity. ठीक है? High bandwidth means high signal carrying capacity of the optical fiber. Now let I tell you simple example here. A single optical fiber can carry over 90,000 TV channel. Over 90,000 TV channel.
and single TV channel having a frequency about or more than that 200 megahertz. 200 mega means 10 raised to 6. 200 into 10 raised to 6 hertz. This is the frequency of single channel. And a single optical fiber whose diameter is 10 micrometer to 100 micrometer carry over a 90,000, a larger than 90,000 TV channels. So it has a very high bandwidth. Now third one, low power loss or low signal loss, we can say that. So here, when we are transferring signal from one point to another point, so over a longer distance also, when we are sending the signal, a very less a signal loss in optical fiber, a less than or about, we can say 0.1 decibel per kilometer. So signal loss is as low as possible here, means 0.1 dB per kilometer. Now fourth one, it is thinner. It is a very thin, you know that how small diameter the optical fiber it has. Now the fifth one is low weight. Its weight is very less as compared to any copper wire. So it is thinner, low weight. These are also advantages of this optical fiber. And very important advantage is it is immune to electromagnetic signal, electromagnetic wave or electromagnetic signal. So what exactly it means that अगर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में से सिग्नल जा रहा है, उसके बाजू में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है, then also that electromagnetic wave doesn't affect the signal of optical fiber. So means optical fibers are immune to the electromagnetic wave. इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ. अगर आप माइक में बात कर रहे हैं यानी अगर आपका फोन आ जाता है, किसी ने आपको कॉल किया, तो माइक में से एक आवाज आती है, एक अलग तरीके से टू 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 करके एक आवाज आ जाती है. द रीजन इज दैट माइक इज नॉट इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मोबाइल में जो जब फोन आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोबाइल कैच करता है एंड वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज कैच बाय द माइक एंड उसके वजह से कुछ नॉइज इंट्रोड्यूस होता है साउंड में. ठीक है, बट हियर यू रिमेंबर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ optical fiber cables. I hope everyone understood this. Now uses of the optical fiber cable. So because of advantages of the optical fiber cable, it is used in many purposes. Means I told you here it is used in defense or it is used in military for high level means where high level of security we have to mention, we are using optical fiber. Not only in the military, but where we want to maintain a high level of security, we can use optical fiber in that case. The second one is it is used for TV transmission of TV signal, means broadband. Basically it is used in the broadband. Now next use is optical fiber is used in medical field also. Now where it is used in the medical field, that I tell you. You may heard the endoscopy. What is endoscopy? Endoscopy generally is used to observe internal body part. अगर आपने कुछ खाया, गलत तरीके से कुछ खाया, कुछ अटक गया आपके गले में, देन क्या है अंदर कुछ डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, तो वो देखने के लिए वी कैन यूज ऑप्टिकल फाइबर. अ स्मॉल ऑप्टिकल फाइबर एक मुंह से अंदर छोड़ा जाता है, उसे एक टिप पे उसे कैमरा होता है एंड बाय दैट वी कैन सी ऑन द मॉनिटर व्हाट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली इन अ बॉडी. So basically we can say that it is used in endoscopy to examine internal body parts. So this is the use of optical fiber. As well as it is used in mechanical purpose also. Means जहाँ पे कुछ एक मशीनरी है, जिस मशीनरी में हम खुद जाके अंदर नहीं देख सकते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, similar to the endoscopy. In that case also we can use optical fiber. ठीक है, we can use optical fiber to observe the remote places in short. ठीक है, these are as well as optical fiber is used to measure the rate of flow of blood also. We are not going in too much detail about this, but you remember many applications are there
for optical fiber. I hope everyone understood this optical fiber. Optical fiber also used in periscope. Now what is periscope? Periscope is generally used in submarine to observe the movement on the surface of sea. तो पेरिस्कोप में क्या होता है? पेरिस्कोप अगर ये सबमरीन है अंदर, देन इन दैट सबमरीन एक ऐसे एक डिवाइस ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे द सरफेस ऑफ सी है, कुछ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, अगर कोई बोट वगैरह कुछ है तो यहाँ पे लाइट रे यहाँ से अंदर एंटर होता है एंड यहाँ पे एक प्रिज्म बनाया होता है, इट इज अ प्रिज्म एवरीवन नो। देन वो लाइट रे प्रिज्म पे इंसिडेंट होके इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आता है। ना यहाँ पे और एक प्रिज्म ऐसे रखा होता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए and the light ray again reflect and reach to the eye of the observer. So here from object light ray आता है and due to this internal reflection at one prism it is again incident on the another prism and again internal reflection होके eye तक चला जाता है। This is a periscope. तो पेरिस्कोप में भी ये सिंपली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। हेलो स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी स्टार्ट a new article from chapter number 9 optics from the syllabus of 11th standard physics, and that article is dispersion of light, dispersion of white light through prism. So this article we have to learn. Now first thing, everyone know about prism because you already done one experiment of the prism in the 10th standard. Now when white light is passed through prism, then that light is separated into its constituent colors and this is called as dispersion of light. Now what is dispersion? Now let I show you with the simple diagram. So if I consider this is a prism, so this is angle A and a white light, a ray of white light is incident on the face AB of the prism. Then it refract here. Then instead of going in a straight line, it refract and separated into its constituent colors. So let I show you here three different colors. The first color here is violet. So the middle color by distance wise is yellow. And here it is red. In between this violet to yellow some other colors are there and the sequence of the color is Vibjol. It means that violet is the first color, then after violet indigo, then blue, green, yellow, orange and red. This is the sequence of the color which we get here. Now, so this is called as a spectrum of the color or dispersed beam of the light. Now pay attention here, this different color having a different angle of deviation. So this is angle of deviation for violet color. So this is angle of deviation for yellow color and this is angle of deviation for red color. Now one thing you remember here, so if I consider here a normal,
then this angle is the angle of incidence. Then these angles are angle of refraction. Then angle of refraction for this violet light, yellow light, red light, it is a different. So angle of refraction is different for different color. So in simple word, we use here Snell's law. Hence, by Snell's law, Snell's law is the refractive index of material of the prism. I use n for that, is equal to sin I divided by sin R. So this is the formula. Now for violet color. For violet color, refractive index for violet color is sin I divided by sin of R for the violet. This formula we get. Similarly, for red color, I consider the extreme colors. Refractive index of the red color is sin I divided by sin of R for red color. Now if you observe this very carefully, so this is, let I show with the different pen here. So this is angle of refraction for violet. Now, so this is angle of refraction for red color. Now angle of refraction for violet color is less as compared to the red color. So as angle of refraction for violet less than the angle of refraction of red. Hence, so angle of incidence is same. This is angle of incidence. After refraction, it is separated into different colors here. So as this angle of refraction for violet is less than the angle of refraction for red, hence we can write refractive index for violet and refractive index of red we can compare here. So refractive index of violet is greater than the refractive index of red. Means for same material of the prism, refractive index vary from a color to color. Means for yellow color light, red color light, violet color light, the refractive index of material of the prism we get different. The relation we can write between the refractive index. So refractive index of violet is greater than the refractive index of yellow, greater than the refractive index of red. So you can remember the sequence of the color. So for violet, a larger refractive index, and for red, a smaller refractive index of material of the prism. The sequence is as per the name only: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this is sequence. Now here, if we are talking about this angle of deviation, pay attention here. If I extend this, then this is the angle of deviation for red. Now if I extend yellow color line like this, then this is the angle of deviation for yellow. Similar manner, angle of deviation for violet. Now here we can conclude that angle of deviation for violet is greater than the angle of deviation of yellow, and yellow deviation is greater than the red. Means this red light is deviated least, more deviation for violet light taken. So these are the facts which we observe when the white light is dispersed. White light is dispersed. As well as you remember one thing here, white light constitutes 7 colors. So when we pass white light, it separated into its constituent colors, means it separated into 7 colors. You can see here. Now here, by sequence wise, green is the central color. But by distance wise, if we measure the distance from violet and red, then yellow color is coming at the center. So yellow color is called as mean color, that you note. You note yellow color is mean color because it is coming at the center of this spectrum. Okay. Then after that this mean color, yellow color is a mean color. We have to note some point about the wavelength also. So here, generally wavelength we represented by symbol lambda.
ठीक है, wavelength we represented by lambda. So wavelength, you know that wavelength for violet color is less and wavelength for red color is more. So wavelength of this violet and red are lying between 4000 to 8000. You know that this visible light having a wavelength approximately between 4000 to 8000, that you learn in the previous standard also. Visible light means the light which we can see is the visible light, and the human eye sees the light only between the violet to the red color. So here the wavelength of the violet color is approximately 4000 and wavelength of the red color is approximately 8000. That also you can remember it here. Okay, I hope everyone understood. One more thing. So here this AB and AC, at these two surfaces refraction occur. So this angle A is also called as, this angle A is called as refracting angle. Refracting angle of prism. Refracting angle means the angle between two surfaces where refraction occurs is the refracting angle of prism, or it is also called as angle of prism. So generally this angle is very important. We have to use it in while solving the problems also. One more thing, you know that if it is an equilateral prism, then every angle is 60 degree. So for equilateral prism we can consider here angle of, means refracting angle is 60 degree or angle of prism is 60 degree. I hope everyone understood this dispersion of light. Now let I ask simple question to you. And the question is, you know that when the white light is separated into 7 colors, if I pass a yellow light from this side, then what happened to this side? We get yellow light only. So listen, dispersion means separation of light into its constituent colors, and white light having a 7 colors in it. So it is divided into 7 colors. But when we pass a single color light and it is incident here, then refracted light is also a same color light. Means if we pass red light, we get red light here. And such light, single color light, is also called as monochromatic light. Now the word is monochromatic. Monochromatic light means light of single wavelength, or single color light is called as monochromatic light. That you remember. Hello student. In this session we have to start new article from chapter number 9 optics from the syllabus of 11th standard physics, and that article is prism formula. Now pay attention here. Last time we learned what is dispersion. Separation of light into its constituent colors is called as dispersion of light. Now I consider here a prism, and through that prism we pass a light of, means monochromatic light. So it's a prism A, B and C. A beam of monochromatic light is incident on this face AB of the prism. Then it refract. Instead of going in a straight line, it bend towards the normal. Now I show here a normal to this surface also, and again here it move away from the normal, and this is the emergent ray. So this is the incident ray. Incident ray. This is emergent ray. Now I consider this is a point of intersection of these two normals. Let I give the name to this incident ray P, Q, and this emergent ray by R, S. Then here, let I extend this
emergent ray to this side. So we get here, this is the angle of deviation, delta. So let I name this point. Here I given the name A, B, C. Let I give the name here D, here E. So we given different name. Any name you can give. Now after that, we have to use here some mathematics. Now pay attention. So where I consider this I is angle of incidence. R is, so here I show here this is the angle of incidence. Now here refraction takes place. So I represent this as a R1. Now here this angle is as an emergent angle. So here this angle I represent by R2. Okay. So here I use E, angle of emergence or emergent angle. Delta, angle of deviation. Capital A, refracting angle of prism. Refracting angle of prism. Now pay attention, let I tell you some mathematics here. Now we have to apply some mathematics to this upper part. So this is the part 1. So let I highlight it by different color. So this is by part 1. Now we have to apply some mathematics in geometry to the part 2. And then we have to apply to this quadrilateral A, Q, D, R. So 3 equations we get, and by these 3 equations we have to obtain a formula of refractive index of material of the prism. Okay, now let I tell you the first equation from figure. So from triangle. So this is the first part, E, Q, R. In 9th-10th standard, you already learned one theorem here. So exterior angle is sum of interior angle, and by using that theorem, so we have to write equations. This delta is exterior angle, and then interior angle is what? This EQR. This is the first interior angle. The second interior angle is ERQ. Exterior angle is equal to sum of interior angle. So I can write here this delta is equal to angle EQR plus angle ERQ. So we get here formula of delta. Delta is equal to EQR and ERQ. Addition of these two. Now let I write this EQR in term of I and R1. We have to write this EQR in term of I and R1. Now pay attention here. So this is straight line. So this line I consider here. P, here name is P, here it is Q, and here it is E. Now here this is normal. So here now name we given D. One more line is going in between this. So this is line. Now this angle is I. Then obviously if these two straight lines are there, this angle is also I. It means that this total angle. So this total angle, let I show it here. This total angle is I. Then we have to write this EQR. Now this EQR is total angle I minus R1. So EQR we can write I minus R1. So I write it here. I minus R1 in a bracket plus ERQ. ERQ. Sorry, ER and this is Q. Now this angle we have to write in term of this E and R2. Now again same here. This is E and this total angle. This total angle is E. From this total angle, if we subtract R2, we get this angle ERQ. So I use here. It is E minus R2. So we get this equation. Now the same equation I am writing like this. Delta is equal to this I. Take a minus R1 plus E plus R2. Sorry, minus R2. Now here I am writing I plus E minus, I am taking minus common, so R1 plus R2 we get. So we get formula of delta. So equation number 1.
See here, this is equation number 1 which we get by this triangle. Now I told you we have to use this second part. So from triangle QDR, we have to write equation from triangle QDR. Now what we get by using that triangle QDR? So you know that in a triangle, addition of all the angles is 180 degree. So I can use here this angle QDR. Angle QDR plus this angle R1 and this angle R2. R1 plus R2 is equal to 180 degree. Is equal to 180 degree. Option number 2. So here we get this angle plus addition of these two angles is 180 degree. Now this is equation number 2. I told you first equation by this part, second equation by this part, and third equation by this quadrilateral. So this quadrilateral AQDR is a cyclic quadrilateral. Cyclic means what? You already learned this cyclic quadrilateral in 9-10 standard. Cyclic means the addition of opposites angle is 180 degree. Now see here, so this is a line and this is normal. Normal means perpendicular. So this angle AQD is 90. Similar manner ARD. This angle is also 90 because this is a normal and normal means perpendicular to the surface. So obviously this angle is 90. Addition of these two angles 90 plus 90 is 180. It means that this angle plus this angle D is also 180. So as I am using here as quadrilateral AQDR is cyclic, hence we write this quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Hence we write this addition angle QDR, this QDR plus this angle A. I use here angle A for refracting angle of the prism, plus A is equal to 180 degree. Equation number 3. So we get 3 equations, one by this part, second by this part, and third by this quadrilateral. 3 equations we get. Now everything is related to the calculation. Now use the equation 2 and 3. By equation 2 and 3. So what you get? 180, 180 is common. QDR is common. Here it is A and here it is R1 plus R2. So by using this equation 2 and 3, we can write A is equal to R1 plus R2. So equation number 4. I hope everyone understood how we get this. Similar manner, if I substitute this equation 4 in equation 1, R1 plus R2 is A. By substituting equation 4 in equation 1, then what we get? Delta is equal to I plus E minus A. So instead of R1 plus R2, I written A. Okay. Then A we have to shift to this side. A plus this delta is equal to I plus E. So this is an important relation in case of this prism. Now question may be asked in examination, prove this relation. So you have to write up to this. Now we have to continue this. Now we have to use one experimental fact. Experimentally, it is observed that when delta is equal to minimum, delta m. So when delta means what? Angle of deviation, this angle. When this angle of deviation is minimum, then I is equal to E. So this is the experimental fact. When delta is minimum, means angle of deviation is minimum, that time I and E both are same. This is the experimental fact. We can plot a graph of this also. In
practicals, you have to do one practical in that. So here we can show angle of incidence means I. So here it is angle of deviation, delta. So we get this type of graph. It means that when this delta is a delta m, that time I and E both are same. So that you have to remember. Now this is the experimental fact. If I and E both are same, see here, this is I, this is E. If they are same, then R1 and R2 also same. Hence, here R1 is equal to R2, then I use R. So why to use R1 and R2? We use R. So R1 and R2 both are same, let me use R for that. If we use R instead of R1 and R2, then equation 4 we can write. Hence, by equation 4, what we write? R1 plus R1. Or instead of R1 and R2, we can write R only. So A is equal to R plus R. We get 2R. A is equal to 2R we get. So R we get A by 2. So we get angle of, this means basically R we get A by 2. Okay, angle of refraction. Now after that, we can use this equation, equation 5. By equation 5. Again we use the experimental fact in that A plus, instead of delta I use delta M, because delta and delta M they are same. So A plus delta M is equal to I. Instead of E we can write I plus I. Or we can write E plus E also. So instead of I can write E also. So E plus E or I plus I can write. I plus I 2I. So we get A plus delta M is equal to 2I. So we get I is equal to A plus delta M by 2. So this is angle of incidence. So we get angle of refraction A by 2, angle of incidence is A plus delta M by 2. Hence by Snell's law, refractive index of material of prism is, you know that Snell's law is sin I upon sin R. So this is I and this is R. Let me substitute. So N is equal to sin of A plus delta M by 2 divided by sin of A by 2. And this is prism formula. This is prism formula. So this is easy derivation. Only the thing is you have to remember what you have to do. First equation by this upper part, second by this triangle, third equation by the quadrilateral AQDR. And then only you have to process this equation by using the experimental fact. I hope everyone understood this. Dear student, from chapter number 9 optics, we start new article, deviation through thin prism. Now thin prism means the prism with very small refracting angle is called as thin prism. For example, if this refracting angle A is a small, then this prism is called as thin prism. Okay, now we have to obtain expression for deviation through thin prism. Now we start with, we know prism formula is, last time we covered prism formula. So refractive index is equal to sin of A plus
delta m by 2 divided by sine of a by 2. So this is the prism formula. Now if the prism having a very small refracting angle, means a is a smaller, then a divided by 2 we get a more smaller term. So a plus delta m is the minimum deviation, which is already minimum. So addition of these two divided by 2 we get a smaller term. So for thin prism we can write, for thin prism we write this sine of a plus delta m by 2 is nearly equal to a plus delta m by 2, and sine of a by 2 is nearly equal to a by 2. If this angle is smaller, then sine of any smaller angle is equal to that angle. For example, if we consider sine 2 degree, you can find out sine 2 degree, then it is equivalent to the 2 degree. So this 2 degree you can convert into the radian and then you can check the natural sine table, you get the same value. Okay, let me substitute these values in above equation. We get, hence, refractive index of the prism is equal to a plus delta m by 2 divided by a by 2. Now these two to get cancelled. So we get formula a plus delta m by a is equal to n. Now we transfer a to this side. N into a is equal to a plus delta m. Now I transfer this a to this side. Then Na minus a is equal to delta m. Now we can take a as a common. N minus 1 is equal to delta m. Now we get a formula of deviation here. Delta m is equal to a n minus 1. Now instead of using delta m every time, let substitute. Let delta is equal to delta m. We are saying this delta m is equal to delta. Let me say delta m as a delta, then we get, hence delta is equal to a n minus 1. This is expression for deviation through thin prism. Now after that, we have to use this formula of the deviation of thin prism in the next article. But you remember, this deviation depends on A, means refracting angle, and the second one, it depends on A, refractive index of the material. And deviation is different for different colors. Now next article we have to start, and it is angular dispersion. Now what is angular dispersion? When we consider, this is a prism. This is refracting angle of the prism. When a white light is incident on one of the face of the prism, then here, instead of going in a straight line, due to refraction, it bent. We get here violet light, and here we get red light. In between violet to red, the sequence of the color everyone know. So this is the sequence of the color. I shown here only the extreme colors only. Extreme colors are violet and red. After the violet, indigo, then blue, then green, yellow, orange, red, these colors are coming. Angular dispersion is angular separation.
angular separation between these two, means angle between these two is angular dispersion. Angle between these two, red and violet light. Now here, let I extend this red light up to this. Then this gives us delta for red light. If I extend this violet light, so we get this is delta for violet light. Then this angular dispersion we get in term of delta V and delta R. So here delta V is this total angle. If we subtract delta R from delta V, we get this angle. So we can write here angular dispersion is equal to delta V minus delta R. Angle of deviation for violet color minus angle of deviation for red color. But we know this formula. Delta is equal to A n minus 1. So this formula we have to use. And by using this formula, we can write angle of deviation for violet. Hence, delta V is equal to A, refractive index of material for violet light is NV minus 1, and delta R is equal to A NR minus 1. Let me substitute. Hence, angular dispersion is angular dispersion का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे. Hence, angular dispersion is equal to delta V minus delta R. Let me substitute the values. A NV minus 1 minus A NR minus 1. A is common in both, so we take outside. NV minus 1 minus NR. Because of this minus 1 is plus 1. So we get this formula. NV minus 1 minus NR plus 1. Then this minus 1 and plus 1 get cancelled. So we get formula A NV minus NR. And this is formula for angular dispersion. Now here, by formula we can conclude that angular dispersion depends on A and NV and NR. A means what? Refracting angle. A means refracting angle of the prism. Hence, it depends on the first one is refracting angle of prism. Refracting angle of prism, that is A. And second thing, it depends on refractive index. N means the refractive index of material for violet light. NR means refractive index of material for red light. Simply, in simple word, we can say that it depends on material of the prism. Material of prism. That is a refractive index. Then after this angular dispersion, similar to this, we have to cover one more term, and it is dispersive power. The next term, I hope everyone understood this angular dispersion. Angular dispersion means angular separation between two extreme colors of the light is called as angular dispersion for extreme color. Now instead of these extreme color, I can consider another color here, yellow color. The angle between yellow and violet is the angular dispersion for violet and yellow. So this is a violet and red color. So it is angular dispersion for extreme colors. Extreme means end colors of the dispersed beam of the light.
Now next one is dispersive power. Next concept. Dispersive power. It is represented by W, small w. Now what is dispersive power? Now let I tell you here expression for dispersive power. Dispersive power, before that expression we discuss what is dispersive power. You know that dispersion means what? Dispersion means separation of light into its constituent colors is the dispersion. Dispersive power means ability of this prism to produce dispersion is the dispersive power of the prism. Okay, this is the conceptual definition. But if you want to calculate dispersive power of this prism, then how we calculate? For that we must have formula. So let I tell you here. Hence, dispersive power is equal to it is a ratio of two things. First one is angular separation between extreme colors of dispersed beam of light. Angular separation between extreme colors of dispersed beam of light divided by deviation of mean color. The ratio of these two is called as dispersive power. Now angular separation between extreme colors of dispersed beam of light means this angle between these two. And deviation of the mean color. Now what is the mean color? Mean color means yellow color. Now let I show here deviation for yellow color. Why yellow color is called as mean color? Because it is lying between the center of red and violet. So this is yellow color. Now here we can show this angle delta y for the yellow. So this is the angle of deviation for yellow. Now we can write in the form of symbols here. Dispersive power. Let I use by W. Angular dispersion, or we can call it as omega also. Delta V minus delta R divided by delta Y. So this is the angular separation between extreme colors and this is deviation of mean color. Now we can obtain the formula. Let me use a formula of deviation here again. We know deviation is a n minus 1. So by using that we can write this deviation of violet is n mu v minus 1. For red color we write a n r minus 1. For yellow color we write a n y minus 1. These are NV, NR, NY. They are the refractive index of material for violet, red and yellow light respectively. Hence, after substituting these values, we get dispersive power is equal to delta V minus delta R. So this is delta V and this is delta R. So the subtraction of delta V and delta R means this delta V minus delta R. A is common in both. Let I take common. Then NV minus 1 minus NR plus 1. And here it is A. The subtraction I written directly. A and the deviation of mean color is NY minus 1. So this minus 1 plus 1 get cancel. A get cancel. V get NV minus NR divided by NY minus 1. This is a dispersive power of prism. Now here yellow color is also called as mean color because it is lying at the center of violet and red color. As yellow is mean color. Hence, refractive index of yellow is refractive index of violet plus red divided by 2.
So if refractive index of violet plus refractive index of red divided by 2, average of violet refractive index of violet and refractive index of red is the refractive index of yellow. ठीक है. By using that, we can write this formula of dispersive power as a NV minus NR divided by, this is NV plus NR divided by 2 minus 1. So this is also formula for dispersive power of prism. Now, same formula we can write in terms of deviation also. So this deviation of yellow is average of these two also. So in that way also you can write one more formula. Now simply, so by this formula we can conclude that this dispersive power depends on, only here the refractive index are coming in the formulas. So here this dispersive power depends only on the refractive index of the material. Means it depends on the material. It depends on material of the prism. And here it is a ratio of two same thing. So this dispersive power is a pure number, don't have unit. The previous one is the angular dispersion. It is the angle. So angle have a unit. But here the dispersive power don't have unit. I hope everyone understood this dispersive power article. Problem may be asked or small question may be asked on this article. So for that small questions or problem you have to remember these formulas. Also, the same formula we can write like this way also. This formula, delta V minus delta R divided by. So deviation of yellow is average of this. Delta V plus delta R divided by 2. So this is also formula for dispersive power. Okay, I hope you understood this article. हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नया आर्टिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. सो न्यू आर्टिकल इज रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. तो हमें एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा. सो आई कंसिडर अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस. सो दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस. लेट आई नेम इट X P Y. X P Y is a single spherical surface which separate two medium. So this is the medium 1 having a refractive index N1, and here I consider this is a medium 2 whose refractive index is N2. Now we have to consider one point object at point O. Now here this point object से एक लाइट रे निकल रहा है and यहाँ पे एक नॉर्मल में ड्रॉ कर रहा हूं. So let I draw normal here. नॉर्मल हमने ड्रॉ की तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ठीक है. एंड यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है एंड वी गेट अ इमेज एट दिस पॉइंट I. यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है. Okay, now let I name here, this is the object, point object. So object distance we name it by U. Okay, image distance we can name it by V. And this is center of curvature. Center of curvature and ये जो पोल है उसका जो डिस्टेंस है ये रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे लिख दिए. Now U is your object distance, V is image distance, R is the radius of curvature. Now we use Snell's law here. By Snell's law, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This is a medium 2, this is medium 1. So is the sign of this angle I, and this angle I called it as the angle of refraction R. Okay, then after that let I name some angle. This is alpha. इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं बीटा.
एंड इस एंगल को नाम दे रहा हूं गैमा। सो साइन ऑफ I, this divided by sine of this R, is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So I write here sine I divided by sine R. So this refractive index, ये जो यहाँ पे टर्म मिली है refractive index of medium 2 with respect to medium 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं refractive index of this medium 2 divided by refractive index of medium 1. ठीक है, तो वैसे लिख लेंगे। So n2 by n1 is equal to sin I divided by sin R. तो ये फॉर्मूला यहां पे हमें मिल गया। बट यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों स्मॉलर है, बट I एंड R आर वेरी स्मॉल। अगर ये दोनों स्मॉल है, फॉर स्मॉलर एंगल वी कैन राइट हेंस साइन ऑफ I नियरली इक्वल टू I लिख सकते हैं, साइन ऑफ R नियरली इक्वल टू R लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी? ठीक है, हेंस refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1 is equal to I upon R। अभी यहां पे क्रॉस मल्टी इसे हम इस साइड भेजेंगे, इसे इस साइड भेजेंगे, तो n2R is equal to n1I। तो इसे हम इक्वेशन दे देते, इक्वेशन 1। इसमें हमें क्या करना है? I एंड R सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम डायग्राम। अगर डायग्राम देखेंगे ये I है, ये R है। हम I एंड R सब्स्टिट्यूट करते हैं इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अभी यहां में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यूज करेंगे हम। अगर ये I देखेंगे, नाउ आई कंसीडर दिस इज स्फेरिकल सरफेस, बट ये जो स्फेरिकल सरफेस है यहां पे मैं कंसीडर करूंगा यहां पे पूरा एक ट्रायंगल O, यहां पे हम नाम देते A, O A एंड C। ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये I क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। एंड यू ऑलरेडी लर्न एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सो फ्रॉम ट्रायंगल OAC, सो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया I के लिए। सिमिलर मैनर अभी ये ट्रायंगल यूज करेंगे ACI, फ्रॉम ट्रायंगल ACI, AC एंड I। अगर ये ट्रायंगल हम यूज करेंगे तो इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, R एंड गामा इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। तो उससे हम R लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ये गामा इस साइड, बीटा माइनस गामा, ये हो गया। हमें I मिल गया, R मिल गया, वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग I एंड R in 1, तो हमें क्या मिलता है? N2 एज इट इज, R की जगह बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू N1 एज इट इज, I की जगह अल्फा प्लस बीटा। हमें ये फॉर्मूला मिल गया। नाउ यहां पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो भी टर्म मिली है N2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। N2 बीटा माइनस N2 गामा इज इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, ये मिल गया। अभी यहां पे बीटा के दो टर्म्स है, बाकी ये दो टर्म तो अल्फा एंड गामा है, तो बीटा के दो टर्म एक ही साइड में ले लेते हैं हम। तो ये वाला N1 बीटा इस साइड भेज देते हैं, ये टर्म उस साइड भेज देते हैं। तो सो N2 बीटा माइनस N1 बीटा इज इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N2 गामा। तो यहां पे बीटा कॉमन है, तो बीटा में निकला बाहर, देन N2 माइनस N1 इज इक्वल टू ये N1 अल्फा प्लस N2 गामा। आई थिंक ये दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है अभी तक। ठीक है, ये तो टर्म मिल गई हमें। उसके बाद अभी हमें क्या करना है? बीटा अल्फा गामा, ये एंगल हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म ऑफ U, V एंड R इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे इक्वेशन नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में
हमें ढूंढना है अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर यूज करेंगे तो उस फिगर से ये जो अल्फा है, ये एंगल, ये आर्क, ये क्या है, आर्क पी ए डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। सो फ्रॉम फिगर अल्फा इज इक्वल टू आर्क एपी, सॉरी आर्क एपी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ये आर्क का यू। बट यहां पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। बाय साइन कन्वेंशन, you know that distances measured towards this left side of this pole are considered as negative and right side of this pole are considered as positive. अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये जो u डिस्टेंस है नेगेटिव आएगा, r पॉजिटिव आएगा, v भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय माइनस यू। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड हमने माइनस यू क्यों लिखा है। जो हमने साइन कन्वेंशन लास्ट सेशन में देखा था, वो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया यहां पे। उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू, अगर ये बीटा देखेंगे तो अगेन आर्क एपी डिवाइडेड बाय आर्क एपी डिवाइडेड बाय ये आएगा आर, एंड गैमा इज इक्वल टू, नाउ अगेन ये आर्क एपी डिवाइडेड बाय ये गैमा, यहां पे एंगल, तो यहां से यहां पी वाला डिस्टेंस ये आ जाएगा वी। Hence, substituting alpha, beta and gamma in equation 2, ठीक है, वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे बीटा है, ठीक है, बीटा क्या है, आर्क एपी डिवाइडेड बाय आर, n2, दिस n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n1 अल्फा n2 गैमा। अभी देखो अल्फा और गैमा हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा एंड गैमा दोनों में आर्क एपी कॉमन है। अभी मैं यहां पे स्पेस कम है इसलिए मैं आर्क एपी कॉमन ही ले रहा हूं, आर्क एपी दो जगह, दो बार लिखने की जगह एक ही बार, ठीक है। उसके बाद n1 एंड अल्फा, n1 एंड ये अल्फा में से क्या बचेगा, 1 बाय माइनस यू बचेगा, क्योंकि आर्क एपी तो हमने लिखा है बाहर, सो माइनस यू। उसके बाद ये प्लस साइन, n2 एज इट इज, मैंने n2 लिख लिया है। n2 के बाद ये गैमा, गैमा क्या है, आर्क एपी, यहां पे एपी मिस हो गया, आर्क एपी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। आर्क एपी तो बाहर लिख लिया हमने कॉमन, तो ये डिवाइड बाई वी लिख देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये आर्क एपी इस साइड वाला और इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। सो देन वी गेट n2 माइनस n1 बाय r इज इक्वल टू, सो माइनस n1 बाय u प्लस n2 बाय v। इसी इक्वेशन को मैं सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा, हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। So n2 minus n1 divided by r is equal to n2 by v minus n1 by u, and this is expression, final expression. ये expression कौन सा है? This is relationship between, this is relation between u, v and r, as well as in term of refractive index also. n2 and n1 are the refractive index, ठीक है। अभी ये हमने क्यों लर्न किया, ये सिमिलर, ये आर्टिकल जो भी हमने लर्न किया ये हमें आगे वाले आर्टिकल में यूज करना है। ये फॉर्मूला ठीक से याद रखो, अभी थोड़ी देर में हम यूज करेंगे इसे, ठीक है। If someone want to note down this derivation, you can note down it. अभी इसके बाद हमें लर्न करना है नेक्स्ट आर्टिकल, एंड इट इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। सो मैं नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूं, लेंस मेकर्स इक्वेशन, जिसमें हमें ये जो फाइनल एक्सप्रेशन यहां पे मिला है वो यूज करना है। सो लेट आई गिव द हेडिंग हियर, लेंस मेकर्स इक्वेशन। आप डिफरेंट
पावर के लेंसेज यूज कर रहे हैं, जो भी स्पेक्टेकल्स वी वेयर दे हैविंग अ डिफरेंट पावर, जैसे इंडिविजुअल की नीड है उस हिसाब से लेंसेज बनाए जाते हैं। जो लेंस मेकर जो लेंस बनाता है वो कौन सा इक्वेशन यूज करता है, दैट इक्वेशन वी हैव टू ऑब्टेन, मींस वी हैव टू ऑब्टेन इक्वेशन फॉर पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस सबको मालूम है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज द पावर ऑफ लेंस। तो यहां पे अभी हम कंसीडर करेंगे, ठीक, एक लेंस है, सो दिस इज द लेंस। अभी यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ओ पे, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। आई कंसीडर दिस सरफेस ए, ठीक है। सरफेस ए पे क्या हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन होगा एंड उस वजह से हमें इस साइड एक इमेज फॉर्म होगी। सो लेट आई नेम इट एज आई डैश। नाउ यहां पे सरफेस बी भी मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये सरफेस बी है, ठीक है। सरफेस बी पे भी रिफ्रैक्शन होगा एंड उस वजह से हमें यहां पे एक इमेज मिलेगी आई, ठीक है। आई कंसीडर हियर मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ये भी यहां पे भी एयर ही है या जो भी है मीडियम 1 ही है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। लेंस का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 में कंसीडर करूंगा, N2 जो भी मीडियम है, मीडियम ऑफ लेंस, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कहेंगे, ठीक है। नाउ लेट आई डिफाइन हियर सम डिस्टेंसेस हियर। यहां पे ये सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो डिस्टेंस रहेगा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से दिखाते हैं। इस डिस्टेंस को मैं V से दिखाऊंगा एंड ये जो डिस्टेंस है आई विल शो इट एज अ V डैश, ठीक है। नाउ लेट R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। ये जो 1 सरफेस है यहां पे, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मैं उसे R1 कहूंगा। उसके बाद R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2। ये जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R2 कंसीडर किया है, ठीक है। R1 हो गया, R2 हो गया। अब ये इक्वेशन हमें यूज करना है, किस लिए यूज करेंगे, हम कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन एट A एंड रिफ्रैक्शन एट B। सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट A, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये यहां पे O पे जो ऑब्जेक्ट है, सो आई राइट हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा U, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया, U। उसके बाद यहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से आई डैश पे इमेज हो रही फॉर्म, तो इमेज डिस्टेंस आएगा V डैश। इमेज डिस्टेंस आएगा V डैश, ठीक है। इमेज डिस्टेंस यहां पे आ गया एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस 1 इज R1, ठीक है। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सरफेस का लिख रहा हूं R1। अगर ये सब चीजें हमने लिख ली यहां पे, तो हमें क्या करना है, वो इक्वेशन लिखना है। कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस टर्म्स। अब देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, N2 माइनस N1। N2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, N1 यानी फर्स्ट मीडियम, R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। V यानी इमेज डिस्टेंस, U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर वो यूज करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। मैं ये पार्ट फिर से इरेज कर देता हूं, इसका कुछ यूज नहीं है, हमें यही इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन में यहां पे साइड में भी लिख लेता हूं, N2 माइनस, यहां पे N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। ये इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं। N2 यहां पे देखो रिफ्रैक्शन A पे हुआ है,
तो इस साइड वाला मीडियम N1 रहेगा एंड ये लेंस का मीडियम 2 रहेगा, यानी कर्व सरफेस के इस साइड वाला 1 और कर्व सरफेस के इस साइड वाला 2। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी लेंस का मीडियम N2 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड इट इज दिस वन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1, सो इज इक्वल टू N2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है डिवाइडेड बाय V यानी क्या, इमेज डिस्टेंस। यहां पे आप देख सकते हैं इमेज डिस्टेंस क्या है, यहां पे लिखा है हमने इमेज डिस्टेंस इज V डैश, सो आई राइट हियर V डैश माइनस N1 is the first medium refractive index divided by U is object distance, object distance मैंने U लिखा है, इक्वेशन नंबर 1। सो ये इक्वेशन 1 मिल गया मुझे। अभी सिमिलरली रिफ्रैक्शन एट B, अभी B पे रिफ्रैक्शन हो रहा है फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी यहां पे ध्यान दो, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन द इमेज फॉर्म एट आई डैश, यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई है दिस इमेज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है बट एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दैट वी गेट इमेज एट आई। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन द इमेज फॉर्म्ड एट आई डैश acts as a virtual object, act as a virtual object, hence हम लिख सकते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आएगा V डैश, यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो V डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो यहां पे इमेज है दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड उसकी वजह से हमें इमेज मिल रही है यहां पे आई पे, तो इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया V, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड कर्व सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में R2 लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये फॉर्मूला हमें यूज करना है एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। अभी यहां पे ध्यान दो, फॉर B रिफ्रैक्शन जो इस साइड हो रहा है B पे, तो ये जो इस साइड मीडियम है कर्व सरफेस के वो मीडियम 1 एंड उस साइड वाला मीडियम 2, तो मीडियम 1 कौन सा है, यहां पे देखो मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका N1 है, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 एंड 2 का N1, तो वो यूज करेंगे। N2 मीडियम 2 यानी N1, यहां पे देखो मीडियम 2 ये है, मीडियम 1 ये है, कर्व सरफेस के इस साइड वाला 1 इस साइड वाला 2, सो N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे R2 है अभी, इज इक्वल टू N2 मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1 डिवाइडेड बाय V का मतलब है इमेज डिस्टेंस, यहां पे इमेज डिस्टेंस है V माइनस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N2 डिवाइडेड बाय U, अभी U यानी क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है V डैश, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हो गए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गए तो बाकी सब मैथमेटिक्स ही है। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं इस साइड वाला यूज कर रहा हूं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, दिस प्लस दिस, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं N2 माइनस N1, ठीक है, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा R1 प्लस ये साइड N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी थोड़ा सा हमें स्पेस मैनेजमेंट यहां पे करना पड़ेगा, N2 बाय V डैश माइनस N1 बाय U प्लस N1 बाय V, थोड़ा सा इस साइड वाला यूज कर लेता हूं, माइनस N2 बाय V डैश, ये हो गया। अभी यहां पे आप देखेंगे N2 बाई V डैश एंड माइनस N2 बाई V डैश, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला इक्वेशन में लिख रहा हूं यहां पे
n2 माइनस n1 बाय r1। अभी इसे n1 माइनस n2 में n2 माइनस n1 लिखूंगा तो माइनस साइड में कॉमन ले लेता हूं, तो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू माइनस n1 बाय u प्लस n1 बाय v। तो ये इक्वेशन मिल गया। अभी हमें इस इक्वेशन का कुछ यूज नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अभी हमें क्या करना है, यहां से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेते हैं, तो n2 माइनस n1 कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। हमें यहां पे मिला 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल टू, यहां से भी हम n1 कॉमन ले सकते हैं, सो n1 में कॉमन ले रहा हूं तो ब्रैकेट में बच जाता है माइनस 1 बाय u प्लस 1 बाय v। तो माइनस 1 बाय u प्लस 1 बाय v मिल गया। ठीक है, ये n1 इस साइड भेज दे देते हैं तो क्या मिलेगा, n2 माइनस n1 बाय n1, ये तो एज इट इज है 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। सिर्फ इसे मैं उल्टा लिख देता हूं 1 बाय v माइनस 1 बाय u, माइनस जो वाली टर्म है वो बाद में लिखिए, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1 इन अ ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये मिल गया। अभी यहां पे हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी। आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया था, ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर इंफिनिटी पे है तो लेंस इमेज किस डिस्टेंस पे फॉर्म करेगी, तो वो है फोकल लेंथ पे। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मींस इफ u is equal to infinity then image is formed at focal length। तो इमेज डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है तो इमेज फॉर्म हो रहा है फोकल लेंथ पे। हेंस अगर ये यूज करूंगा मैं यहां पे तो क्या मिलेगा, सो 1 बाय v की जगह f माइनस 1 बाय u की जगह इंफिनिटी इज इक्वल टू ये n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1। इस साइड तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है तो ये मिल गया। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज कमिंग जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक टर्म मिल गई 1 बाय f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 इन अ ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 एंड दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स इक्वेशन। दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। ठीक है, ये लेंस मेकर्स इक्वेशन हो गया 1 बाय f। अभी मैंने यहां पे कंसीडर किया था मीडियम 1 एंड लेंस का जो मीडियम है मीडियम 2। अगर ये लेंस एयर में है, इफ द लेंस इज इन एयर, तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इफ लेंस इज इन एयर इट मींस दैट ये जो मीडियम 1 है इस साइड वाला ये तो एयर हो जाएगा, देन n1 क्या हो जाएगा 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो n1 का वैल्यू 1 डाल दो तो इक्वेशन मिल जाएगा। सो 1 बाय f इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी मैं जो भी लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 नहीं कहूंगा, n ही कह देता हूं। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, n माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 एंड दिस इज expression for lens maker's equation when the lens is in air and the refractive index of the lens is n। ठीक है, ये हो गया लेंस मेकर्स इक्वेशन। बट यहां पे अगर लेंस किसी भी मीडियम में प्लेस की गई है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस और रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर ये दो इक्वेशन हम इक्वेट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 तो नाम दिया है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं इक्वेशन इसे नाम देता हूं 3। ये नहीं, नीचे वाला इक्वेशन ये मैं यहाँ पे 3 नाम दे देता हूं एंड दिस इक्वेशन एज अ 4 बाय 3 एंड 4। 3 कौन सा ये इक्वेशन एंड ये क्या है 4। अगर दोनों को देखेंगे तो एक साइड जो राइट हैंड साइड है दोनों की सेम है,
तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/f का फॉर्मूला मिलेगा, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड ये क्या है, लेंस इक्वेशन है, दिस इज लेंस इक्वेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। Dear student, in today's lecture we start a new article from chapter number 9 optics, and it is magnifying power. Magnifying power of simple microscope. ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है एक अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप मींस अ सिंगल लेंस, अगर हम एक लेंस में से एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है उसका, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। तो यहाँ पे पहले लर्न करते हैं मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, मींस डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर। जब मैग्नीफाइंग पावर हमें लर्न करना है तो उसके लिए हमें एक टर्म मालूम होनी चाहिए, एंड इट इज डीडीवी। डीडीवी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इन शॉर्ट डीडीवी। ठीक है, यू ऑलरेडी लर्न इन 10th स्टैंडर्ड व्हाट इज डीडीवी। सो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज a minimum distance from unaided eye, unaided and healthy eye, so at which object can be seen clearly without causing strain to the eye muscle, and that distance is distance of distinct vision. इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बहुत ही नजदीक देखेंगे, रखेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वहां पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वी कैन सी इट वेरी क्लियरली विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन टू द आई मसल, and that distance is the distance of distinct vision. अगर हम देखेंगे अडल्ट के लिए, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो उसकी आंखें हेल्दी है विदाउट एनी नंबर, तो उसके लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। बहुत बार आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत ही नजदीक नोटबुक रख के लिखते हैं। फॉर चिल्ड्रन दैट डिस्टेंस इज डिफरेंट, दैट इज लेस देन द 25। ठीक है, वो एक आप बात याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सबको मालूम चल गया। तो अभी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप यहां पे मैं फॉर्मूले के टर्म में लिख रहा हूं। यहां पे एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल subtended at eye by object at DDV। वो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, DDV पे। तब जो एंगल बनाएगा आई के साथ, दैट एंगल इज दिस। तो यहां पे एंगल के लिए हम इस एंगल को, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज, उसे मैं बीटा लिख देता हूं, एंड इस एंगल को अल्फा लिख देता हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, बीटा बाय अल्फा। तो इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें अभी क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। वी हैव टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर magnifying power, I will use short form m dot p, magnifying power of simple microscope। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां पे मैं दो केसेस कंसीडर करूंगा, दो डायग्राम ड्रॉ करूंगा। पहला डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई कंसीडर दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। अगर ये एट डीडीवी है
आई से डीडीवी डिस्टेंस पे है, तो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा यहां पे आई है, ठीक है। व्हेन इट इज एट डीडीवी मींस ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी, तो मैं इसे फिगर ए कहूंगा, ठीक है। फिगर ए में मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, एंड वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, डीडीवी पे है। तो जो भी ये ऑब्जेक्ट आई के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल दिख रहा है यहां पे, सो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया व्हेन इट इज एट डीडीवी उसे हमने अल्फा कहा है, तो मैं इसे नाम दे रहा हूं अल्फा। सिमिलर मैनर अभी मुझे क्या कंसीडर करना है, उसका इमेज, ठीक है। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है एक सिंपल लेंस, सिंगल लेंस, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है यहां पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम अंडर द लेंस इसे देखेंगे तो हमें मैग्नीफाई होके एक इमेज दिखेगा, ठीक है। यहां पे मैंने ये जो लाइन दिख रहा है ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है, यहां पे हमें मैग्नीफाई होके यहां पे एक इमेज दिख रहा है, उसे मैं नाम दे रहा हूं A1 B1, ठीक है। तो इमेज जो एंगल बना रही है, लिसन, यहां पे जो रेज जाएंगे ये जाएंगे टू आई, मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, आंखों में ये रेज जाएंगे, उसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा A1 B1। तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज, उसे मैंने नाम दे देता हूं बीटा, ठीक है। तो लेंस से यहां तक जो डिस्टेंस है मैं उसे लिखूंगा u, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम u से लिखते हैं। ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस वी राइट इट बाय v, तो ये हो गया v, एंड इसे मैं फिगर b लिखूंगा, ये फिगर b है, ठीक है। फिगर a फिगर b दोनों का यूज करेंगे एंड वी ट्राई टू ऑब्टेन मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं ऐसे मैंने ये कर दिया है फ्रॉम फिगर, सो लेट आई यूज बोथ द पोर्शन हियर। सो फ्रॉम फिगर ए, पहला मैं यूज करूंगा फिगर ए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा, हमें निकालना है बीटा, एंड इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा। तो फिगर ए देखो, ये फिगर ए है। टेल मी tan ऑफ अल्फा इज हाउ मच, tan ऑफ अल्फा, tan का मतलब होता है tan ऑफ एनी एंगल मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी अल्फा के अपोजिट है ए बी एंड एडजेसेंट है डी, सो यहां पे tan अल्फा आ गया ए बी अपॉन डी। बट हियर जो अल्फा जो एंगल है, ये जो अल्फा एंगल इट इज वेरी स्मॉल, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है, हेंस हम लिख सकते हैं tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। तो वैसे है तो अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा ए बी बाई डी, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या किया है, अल्फा छोटा है इसलिए tan अल्फा को मैंने क्या लिखा है, अल्फा लिखा है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई डी, एंड उसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फ्रॉम फिगर बी हम क्या करेंगे, tan ऑफ बीटा निकालेंगे। देखो बीटा निकालना है अभी, तो tan ऑफ बीटा क्या आएगा, आगे अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है ये u, ए बी बाई यू। या अगर हम इमेज वाला देखेंगे, पहले मैं ये देखता हूं, ये भी अपोजिट है इसके, सो a1 b1 डिवाइडेड बाय ये एडजेसेंट कितना हो रहा है, ये देखो v है, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं a1 b1 डिवाइडेड बाय v एंड विच इज इक्वल टू, so this a1 b1 divided by v equal to ab divided by u, ठीक है, ab divided by u, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूंगा, मैं ये कंटिन्यू कर लेता हूं, tan of beta is equal to ab divided by u, but beta is very small। अगर बीटा स्मॉलर है तो क्या लिखेंगे, tan of बीटा को हम बीटा लिखेंगे, tan of बीटा नियरली इक्वल टू बीटा आएगा, हेंस
हमें इक्वेशन मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू ए बी बाई यू, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो अल्फा मैंने ऑब्टेन किया है, बीटा मैंने ऑब्टेन किया है, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है बीटा बाय अल्फा, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। हेंस मैग्नीफाइंग पावर इज, अभी देखो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एम इज इक्वल टू क्या है, बीटा बाय अल्फा। सो बीटा तो ये है ए बी बाई यू डिवाइडेड बाय, एंड अल्फा क्या है, ए बी बाई डी। ठीक है, तो यहां पे मिल जाएगा ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डी बाई यू। सो मैग्नीफाइंग पावर मिल गया डी बाई यू। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर तो मिल गया डी बाई यू, ये फॉर्मूला आपने 10th में भी लर्न किया है। D is distance of DDV, means 25 centimeter for normal eye, and U is the object distance. अभी इसे हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे बाय लेंस इक्वेशन। हमें ये सिंगल हमने लेंस यूज किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है लेंस इक्वेशन से, जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। अभी इससे यहां पे अगर देखेंगे लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो F पॉजिटिव होता है। सो हियर F इज पॉजिटिव एंड U एंड V बाय साइन कन्वेंशन, अगर देखेंगे लेंस के इस साइड ही U है, इस साइड ही V है, तो डिस्टेंसेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिस ऑप्टिकल सेंटर आर नेगेटिव एंड U एंड V आर नेगेटिव। अगर ऐसा है तो हेंस 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/v प्लस 1/u आ जाएगा, इसको माइनस एंड ये माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं, 1/u का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, हेंस 1/u लिख रहा हूं मैं, तो माइनस 1/v इस साइड जाएगा, 1/f प्लस 1/v। सो मल्टीप्लाइंग, नाउ आई एडजस्ट दिस टर्म, d by u एडजस्ट कर लेता हूं, यहां पे तो 1/u है, तो d by u एडजस्ट कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय d, multiplying both sides by d, both sides by d, तो क्या मिल जाता है, तो ये मिल जाएगा d by u इज इक्वल टू d by f प्लस d by v, एंड d by u क्या होता है, d by u तो मैग्नीफाइंग पावर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हेंस मैग्नीफाइंग पावर इज d by f प्लस d by v। This is expression for magnifying power. Magnifying power of simple microscope. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके भी दो केसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, केस 1, केस 1 में हम कंसीडर करेंगे यहां पे जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है, वो इमेज फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, व्हेन v इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन अगर v का वैल्यू इंफिनिटी डालूंगा तो d बाई इंफिनिटी 0 आ जाएगा, ये तो मैग्नीफाइंग पावर मुझे मिल जाता है d बाय f। केस 2, अगर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज भी मुझे ddv पे मिल रहा है, इफ इमेज फॉर्म इज एट ddv, तो इसका मतलब है इफ v इज इक्वल टू d, देन अगर v की जगह d डालूंगा तो d बाई डी 1 हो जाएगा, सो d बाई f प्लस 1, या मैं 1 प्लस d बाई f लिख देता हूं, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f, ये भी मैग्नीफाइंग पावर है। इसका मतलब है कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप हम कंसीडर करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू किस रेंज में आ सकती है, d बाई f टू 1 प्लस d बाई f, इस रेंज में हमें मिल सकती है। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूलेज एंड ये डेरिवेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस।
Hello everyone. Now in this session we have to start a next article from chapter optics, and it is magnifying power of compound microscope. बहुत सारा पार्ट जो अभी आप बोर्ड पे दिख रहे हैं वो मैंने लास्ट वाले आर्टिकल का कंटिन्यू रखा है। जो हमने लास्ट वाला आर्टिकल लर्न किया था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये जो दिख रहे हैं वो उसी का है। सिर्फ अभी हमें लर्न करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस आते हैं, ठीक है। एक लेंस क्या करती है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है मैग्नीफाइड, एंड दूसरा लेंस क्या करता है, उस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करके और उसे मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज तैयार करता है। तो इसका मतलब है यहां पे दो इमेज तैयार होगी, एक बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के साइड में जो लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, एंड जो आंखों के साइड में उसे आईपीस बोलेंगे या आई लेंस आईपीस बोलेंगे हम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एक इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। उस इमेज को आईपीस क्या करेगा, मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। तो ये यहां पे प्रोसीजर है, ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। तो ये डेफिनेशन जो हमने पहले लिखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में वही है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज, बट यहां पे दो इमेज है तो मैं यहां पे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, फाइनल इमेज टू दी एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी। तो ये बीटा एंड अल्फा हमने कहा है वो लिखा है यहाँ पे। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैं एक डायग्राम जो दिख रहा है आपको फिगर ए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डीडीवी, तो ये एक डायग्राम दिखा है, इसे फिगर ए कहेंगे। डिस्टेंस इज डीडीवी, एंगल अल्फा है यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जो लेंस दिख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे ओ लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है यहाँ पे ये क्या है, आईपीस, ये आंखों के साइड में इसलिए आईपीस। तो ये ऑब्जेक्ट है एबी, ये लेंस क्या कर रहा है, एबी को मैग्नीफाई करके एक इमेज फॉर्म कर रहा है A1B1। ये पहला इमेज है A1B1, ठीक है। इससे तो ये बड़ा दिख रहा है। देन दिस आईपीस इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा एंड इसे मैग्नीफाई करके हमें फाइनल इमेज देगा A2B2। तो यहां पे अगर नाम कैसे दिए आप देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो यू हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट में ओ लिखा है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव। ये लेंस यहां पे इमेज फॉर्म कर रहा है तो इसका डिस्टेंस मैंने लिखा है वी ओ। इमेज डिस्टेंस हम वी से दिखाते हैं, बट ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने तैयार किया हुआ इमेज है इसलिए वी ओ लिखा है। देन ये लेंस क्या करेगा, इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, ठीक है। इसलिए इस लेंस से इसका डिस्टेंस मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, यू ई। यू हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू सबस्क्रिप्ट में ई लिखा है, ई फॉर आईपीस, क्योंकि आईपीस वाला जो लेंस है उसके लिए ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड इसे मैग्नीफाई करके यहां पे हमें मिल रहा है फाइनल इमेज। तो ये जो यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस है फॉर दिस लेंस, सो वी ई लिखा है। V is the image distance, E for eyepiece, ठीक है। तो ये नाम हमने दे दिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, we find out this alpha beta, ठीक है, and we substitute in this formula, we get magnifying power of this compound microscope। तो डायग्राम A से जो कॉमन ही है आप देख सकते हैं, tan of this alpha, ये अल्फा है यहाँ पे। tan मीन्स क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट AB है, एडजेसेंट D है, तो AB by D। नाउ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा छोटा है तो हम tan अल्फा को अल्फा लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू AB by D, इक्वेशन नंबर 1 दिया फ्रॉम फिगर बी। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं दिस इज फिगर बी, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फिगर बी। tan ऑफ बीटा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, tan ऑफ दिस बीटा क्या आएगा, A2B2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अभी VE। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं A2B2 डिवाइडेड बाय VE। अगर मैं ये कंसीडर करूंगा A1B1 डिवाइडेड बाय दिस क्या आएगा, इसका डिस्टेंस क्या है UE। A1B1 डिवाइडेड बाय UE, ये आ गया tan ऑफ बीटा। दोनों में से कोई भी एक कंटिन्यू करेंगे हम, तो हम कंटिन्यू करते हैं A1B1 डिवाइडेड बाय UE।
ये यू है, ये सबस्क्रिप्ट में ई। एज बीटा इज वेरी स्मॉल तो tan बीटा आएगा, बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है A1B1 डिवाइडेड बाय UE। ठीक है, मैं ठीक से लिख रहा हूं, A1B1 डिवाइडेड बाय UE। हेंस मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है बीटा बाय अल्फा। अभी बीटा हमें मिला है इक्वेशन 2 से, क्या ये A1B1 डिवाइडेड बाय UE डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है AB डिवाइडेड बाय D। ठीक है, मैं उसे अभी कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा तो मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं A1B1 डिवाइडेड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय ये D ऊपर चला जाएगा D/UE। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, उसका मैग्नीफाइंग पावर हमें सिर्फ D/U मिला था। यहाँ पे D/UE भी है सिमिलर टू दैट, एंड यहाँ पे A1B1 डिवाइडेड बाय AB भी है। अभी A1B1 क्या है, ये क्या है साइज ऑफ इमेज, AB क्या है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने एक रेशियो लर्न किया है, बट हमें एक मालूम है, बट साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रेशियो हमें मालूम है। तो साइज ऑफ इमेज यहां पे A1B1 मैं यहां पे लिख रहा हूं A1B1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अभी देखिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखना है हमें, तो एक काम कर लेता हूं मैं, ये लेंस कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज VO एंड ये आएगा VUO। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज VO डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज UO। ठीक है, ये मिल गया हमें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। हेंस मैग्नीफाइंग पावर इज, सो M इज इक्वल टू हमें मिल रहा है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं VO डिवाइडेड बाय UO मल्टीप्लाइड बाय D/UE। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर यहां पे आ गया। अभी ये क्या है VOUO, OO आ रहा है, तो हम ये मैग्नीफाइंग पावर किस लेंस का मिल रहा है, ये तो मिल रहा है हमें ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का, दो लेंसेस है, एंड ये यहाँ पे UE आया है, तो ये क्या है आईपीस वाले लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। बिकॉज लास्ट में हमने देखा था D/U भी मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के आर्टिकल में, तो यहाँ पे D/U भी मैग्नीफाइंग पावर है, बट ये आईपीस के लिए आएगा। बट मैं यहां पे लिख रहा हूं हेंस M इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ये आईपीस, तो इसे मैं ऐसे भी लिख दूंगा MO मल्टीप्लाइड बाय ME। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का और एक फॉर्मूला। अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर इंडिविजुअल लेंस की मालूम है, ऑब्जेक्टिव का भी मालूम है, आईपीस का मालूम है, तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ वी गेट टोटल मैग्नीफाइंग पावर। या हम केसेस भी देख सकते हैं। केस 1, सो फॉर आईपीस, जो आईपीस हम यूज कर रहे हैं उस लेंस के लिए, फॉर आईपीस if image is formed at infinity, अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस होता है D/F, जो हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था। दो केसेस, वही केसेस है। अगर ऐसा है तो मैग्नीफाइंग पावर हमें कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसका मिलेगा M0 इंटू दिस। M0 को मैं ये ऐसे लिखूंगा V0 डिवाइडेड बाई U0 एंड ME को मैं लिखूंगा D/F। तो ये हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल जाता है।
अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही तो देखो इमेज तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है अभी आप देख रहे हैं, बट ये इंफिनिटी पे फॉर्म होगी तो हम वैसे लिख सकते हैं. केस 2 फॉर अगेन आई पीस. इफ image is formed at DDV, then magnifying power of eyepiece क्या होता है 1 plus D by F. अभी F कौन सा है, eyepiece वाला है, ये लिख रहा हूं सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे FE. ठीक है, तो hence magnifying power of compound microscope में लिखूंगा V0 divided by U0 in a bracket 1 plus D by F E. ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला. अभी देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दो वैल्यूज मिले. ये पहला वाला इफ इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी एंड इफ इमेज इज फॉर्म एट DDV, तो ये दूसरा मिला है. इसका मतलब है मैग्नीफाइंग पावर इन दोनों के बीच में ही वैरी होगी. ये तो ये दिस इज द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. थैंक यू.